नमस्कार दर्शक मित्रों। आज के थिंकलाइन के हमारे नए संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की और साथ में चल रहे चुनावों की। मैं सीधी भाषा में पहले बता दूं कि काफी पश्चिमी ऐसे राष्ट्र हैं, इंपीरियल राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, इंपीरियल लोग जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा समझते हैं, पिछले 10 सालों से तो बहुत ज्यादा, कि उनको नरेंद्र मोदी अब नहीं चाहिए। उनको एक ऐसी मिली जुली सरकार चाहिए, ऐसी एक जिसे कहे ना, वीक गवर्नमेंट चाहिए भारत के अंदर, जिससे वो अपना काम कर सके और साथ में अपने कॉफर्स भर सके, मगर भारत को वही का वही रहने दे। भारत विकास की ओर, प्रगति की ओर, एक सच में विकसित राष्ट्र बनने की ओर जब जा रहा है, तब हम देख रहे हैं कि लोगों को पसंद नहीं है। हमारे साथ इन बातों की चर्चा करने के लिए डॉक्टर आदित्यन जी मौजूद है, आपके जाने पहचाने जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर, आपको बहुत गुड मॉर्निंग, हमारे लिए तो गुड इवनिंग हो चुका है। द सिटिंग समवेयर इन यूएस, बट सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग फॉर यू, सुप्रभात फॉर यू। Why is it my pertinent question? We are in the midst of election. Tomorrow there'll be fourth phase of election. 96 seats will go to poll. But we are seeing every day, constantly, the interference from the so-called colonial imperial powers who think that they have the inherent right to say anything and everything to Bharat, India. But when it is given back to them in plain words, the way Jaishankar gives it, आईना दिखाते हैं जब, तब इनको पसंद नहीं है। Why is that mentality still existing after 75 years of leaving India? Still, why do they think that they can act funnily with? I'll call it act funnily with. Sorry for my strong words at times, people from my generation, not my generation, the generation above me, which you belong to, they don't like. But we speak plain. And today I'm going to speak the language what my government speaks. Sir, the platform for you. So it is a reality that colonialism has been replaced by colonialism by any other name. The process of decolonization after World War II was only a physical process. So physical colonization was replaced by colonization by other means, for which you had a whole ecosystem created that had Bretton Woods institutions, IMF, World Bank, creation of United Nations in which the victor of the World War II ruled the roost. And whether it is quote unquote free trade, fair trade, environmental issues, labor issues, the whole thing process has been rigged to the advantage of Western colonial countries, Paschim Samrajyavad. Now, the center of gravity of geopolitics is shifting as Asian nations are rising. And whether it is geoeconomics or geopolitical issues, world is changing in a different directions. Asian nations, including India, are rising, they are self-asserting, and West has to compromise. Now, West succeeded very well in dissolution of Soviet Union. So for a period of time, for almost 30 years, it was unipolar world. From bipolarity, we went into unipolarity. Now we are obviously going into multipolarity. It's Multipolar. not there yet, but India is emerging as a new pole, and West has realized that. Now, I have to add another element. It's not just Western colonialists, it's Asian colonialists also.
And you know which country I'm We are referring talking to. about China. Yes, even China has problems with India's rise. China has done everything and anything to prevent India's rise on international arena. And when we talk about interference in elections, yes, the former colonial powers have created institutions that always interfere in the electoral process. But I can tell you, China is doing the same. In fact, there was a report by Microsoft recently that China is using AI. China is an AI superpower to influence Indian elections. They create deep fakes. They did the same in Taiwan elections, but didn't Couldn't get much succeed. results. Historically, I can also tell you that the former Soviet Union also interfered in Indian elections. You might have heard about Mitrokin archives, and it is clearly stated that KGB was sending money to India during election times. They had purchased two political parties. One of them was CPI, and second was Congress. So things do not stop here. The latest puppet whose strings are being pulled from abroad with his new party got $16 million between 2014 to 2022. We are talking in terms of, सर सीधी भाषा में बात करते हैं, ये लोग सब लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी को जो पन्नू ने भेजे थे पन्नू ने 134 भेजे थे करोड़ और पश्चिम एशिया के राष्ट्रों से, कतर से पैसा आ रहा है। तो इसमें ये बात देखने की है कि खिलाड़ी बहुत हैं, एक खिलाड़ी नहीं है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पश्चिमी साम्राज्यवादी राष्ट्र ये कर रहे हैं, ये बहुत राष्ट्र कर रहे हैं। जब हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं तो हम कहते हैं यूएस, कनाडा, इंग्लैंड। Sir, I'm coming to that. I'm coming to that. My question, pertinent question. Five eyes. Five eyes. यस। जिसके अंदर पूरा जो आपने बताया आ जाता है कि यूएसए है, कनाडा है, इंग्लैंड है, मतलब यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। ये फाइव आईज को क्यों इतना खटकता है सर? देखिए, फाइव आईज is an Anglo-Saxon alliance. These are the countries that reflect the British or Anglo-Saxon imperialism. So although the leadership got shifted from UK or Britain to United States, but they are all the same stock racially. New Zealand, Australia, of course, you know, Australia was the Botany Bay where prisoners used to be sent. And at this point in time, Australia, maximum immigration actually is from UK. So they have their geopolitical interests tied together under the leadership of US. They share intelligence, signal intelligence, human intelligence, technical intelligence, everything. And yes, they are one of the pillars of the imperialist nations, if I may say so. So if you see, whenever there is an issue in India, you know, Shaheen Bagh, JNU agitation, Jamia Millia, CA agitation, who was in the forefront? Five Eyes countries. They are also realizing slowly that India is asserting and we have to have good relationship with India. So equation is changing. But as you say, leopard never changes his spots. The only way to counter it is for India to continue to go on the path of self-reliance and development and developing as a strong nation that can assert itself. And fortunately for Bharat, and unfortunately for our Western friends, India has taken a trajectory
that India cannot be controlled by quote unquote vested interests. It used to be possible when there were weak alliance governments. It was possible even during the 10 years of UPA government. We almost gave away Siachen Glacier to Pakistan under Manmohan Singh till the army put its foot down. We had a quote unquote memorandum of understanding with China between Congress Party and CCP. We don't know what are the contents of that. 2008, Rahul Gandhi signing it. Money was being sent to Rajiv Gandhi Foundation from China. I mean, you have to connect the dots. And Rahul Gandhi says that China has a vision. They have a strategy. And they are having clandestine meetings with Chinese officials. For any reason, whether you go on Amarnath Yatra, there you meet, you go to Nepal for a wedding, and you meet the Chinese ambassador in a disco, or when there is this Doklam crisis, you go to Chinese ambassador's house for a feast. So there are problems. There are problems coming from every side, and the government of the day has to be aware of these foreign interferences and make sure that this does not have any, major influence on the trajectory of national development. Sir, let me stop you. Now you said of things, which Rahul Baba has been doing. But what you have said, and after that the period came, there is another man who has been prepared, who was in jail for 51 days, has come out. Yeah. Yes. He was given a Magsaysay award. He's a Kattar Imandar politician of Bharat, India. Nobody else is Imandar, but he is very Kattar Imandar. That is what he perceives. And he says it in openly. Now he has promised, I have my question pertaining to this is, he has promised that if he comes to power, see the dream and see the, Kattar Imandari or such bolne ki baat, fighting just 22 seats out of 543, he says if he comes to power, he'll give free bijli to all the Kisans. That is what he's been talking. तो बम्बैया भाषा में जो कहते हैं ना हम बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाली बात हो रही है अभी और उसको चलाया जब मेरा सवाल सीधा सा ये है सर why is it that even our judiciary इसको चलाने की बात कर रही है? देखिए अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो एक मुहावरा याद आता है, नटवर लाल के हसीन सपने। तो आप 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ये एक विडंबना है और सब जानते हैं कि ये कठपुतली हैं। जिन संस्थाओं का आपने नाम लिया उनमें मैं आपको एक दो और भी बता देता हूं। उन्हें अशोका फेलोशिप दी गई थी 2004 में। उनके जो एनजीओज थे 2 या 3, एक कबीर फाउंडेशन था, एक परिवर्तन था, एक आध और थे, उन सबको जो पैसा आया था वो फोर्ड फाउंडेशन से आया था, वो रॉकफेलर फाउंडेशन से आया था। और ये जो संस्थाएं हैं और जॉर्ज सोरोस की एक ओपन सोसाइटी कुछ ऐसे करके है, वहां से है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ऐसा कुछ या तो उनसे पैसा आया था और इनको चलाया जा रहा है। इनके जो तार खींचे जा रहे हैं वो विदेशों से खींचे जा रहे हैं। इनको जैसे कहते हैं ना, ग्रूम किया जाता है। इनको तैयार किया जा रहा था भारत में इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो पश्चिमी राष्ट्रों के जो
समाचार पत्र थे, उनके जो संवाददाता थे, जर्नलिस्ट थे, सब लोगों ने कितना शोर मचाया था। क्यों? Lot of noise, sir. They made a lot of noise. Yes. इसलिए कोई कारण होगा। और ये एक अवतार में आए थे अन्ना हजारे के साथ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, कट्टर धर्मनिरपेक्ष। बजरंग बली के बाद लेकिन जो छवि बनाई थी वो तो सारी धूमिल हो गई। सभी को पता है कि ये ईमानदार नहीं है, हर जगह से पैसा ले रहे हैं। इनके जो पुराने सहयोगी थे, एक के बाद एक छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था इनकी ईमानदारी पर। और बहुतों ने ऐसी टिप्पणियां की हैं, ऐसे वक्तव्य दिए हैं इनकी ईमानदारी के बारे में। कुमार विश्वास ने इनकी देशभक्ति के प्रमाण पत्र दिए हैं कि ये या तो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे 2019 में, या एक स्वतंत्र भारत से अलग हुए राष्ट्र, उसका प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो इनको, जैसे कहते हैं ना कि इस नाट्य मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है इनके आकाओं द्वारा। और उस प्रोसेस में हमारी जो न्यायपालिका है उसका भी एक महत्व है, महत्वपूर्ण योगदान है कि आपने पहली बार ये नहीं कहा कि इनका अरेस्ट गलत था, गिरफ्तारी गलत थी। आपने ये कहा, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, बट ही डिजर्व्स टू गेट इंटरिम बेल because of the elections. This is the first time in history of India that a person who has been accused of corruption has been released from jail on interim bail despite not asking for it in the Supreme Court, suo moto, on their own, by a two-judge judicial bench. Why? This person is not a candidate. There is a successionist candidate by name Amritpal Singh who is contesting the elections. He's still in jail. Hemant Soren, who is facing similar he's kind not of, given a bail. he has not been given a bail. He is still in jail. He had to resign from chief ministership. So we are giving special treatment to this individual, including the judiciary, and that is very regretful. That is very regretful because judiciary has created a precedent for future. Any criminal can, Asked for it. during election process, file the nomination, because you are allowed to file your nomination from the jail and then say, release me. No, Supreme but they Court are saying decided that like this. he's not a habitual criminal. Yeah, Judiciary, Supreme Court has already yeah, said. yeah. He is not a habitual offender. This is the first time issue, and we Yes. are not commenting on the merit of the case, Merit but of he the should be case. allowed to. Go. सर क्या आप Now, समझते हैं? अभी मुझे ऐड करने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए, बिकॉज आई हैव हम्म, टू मोर क्वेश्चंस बिफोर आई फिनिश बोलिए। दिस। मुझे ऐड करने दीजिए। कहीं कहीं से कुछ चिड़िया आके बोल जाती है कानों के अंदर कि अभी तो बहुत कुछ खेल होना बाकी है, क्योंकि शाहीन बाग की आपने बात की। कहीं ना कहीं शाहीन बाग में पैसों का तार हमारे महाशय से, कट्टर ईमानदार महाशय से जुड़े हुए होने की बात हो रही है, जिसकी भनक या जिसके प्रूफ्स बोलते हैं हम, are with the agencies. That's number one. Number two, NIA has been told to be ready to get into the case of 134 crores, which the allegedly Pannu has very clearly said that they have paid to Kejriwal. Then we'll go to the other issue.
So definitely there was foreign money flowing into Bharat during Shaheen Bagh and related agitations, whether that was farmers' agitation or anti-CA agitation or JNU or Jamia Millia. These were one and the same thing. It was the same players. It was the same faces that were coming. And the money everyone knows was coming from abroad, especially from Canada and US for those agitations. And although our system is slow and it takes time to investigate, system is not very fast, but I'm pretty sure by now agencies have the information. But prematurely releasing that information also can be counterproductive. So just like you have to go through the due process, they will go through the due process. And this gentleman knows what is in store for him. So he is using all the antiques, all the histrionics, uh, you know, that my right to campaign for the elections, they want to destroy my political party, they want to, dismiss my government, they want my party's government to fall, all that kind of thing. He knows where he is. Why did he refuse to attend to summons 9 times? That was not related to elections. That started in October of 2023. The national elections were not due there. If he had gone for the first summons, things would have come out there and then. But he knew that He can why drag it on. why would you destroy 170 mobile phones? Why would you do that? Because you are destroying the evidence. तो दर्शक मित्रों, ये मामले में तो बड़ा खेल होने वाला है, अभी तो बाकी है। अभी तो ट्रेलर है, बस खाली 50 दिन का हमने देखा, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अब मैं दूसरे मामले की ओर जाता हूं और फिर हमारे आज के सब्जेक्ट का मूल प्रश्न। दूसरा मामला है, सर मैं पश्चिम भारत से हूं तो मैं अरब हूं। मेरा एक मित्र उत्तर भारत से, दिल्ली से है तो वो तो गोरा है। मेरी एक दोस्त है जो नॉर्थ ईस्ट से है तो वो चाइनीज है। आप हमारे मित्र हैं, आप दक्षिण भाग से है तो आप अफ्रीकन है। दिस बाल्कनाइजेशन ऑफ भारत, सालों से ये ख्वाहिश थी, सालों से ये ख्वाहिश थी, मैं कहूंगा अचानक मुंह से बाहर निकल आई। और आप ही के देश में बैठे हुए हैं हमारे एक भारतीय जो ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख है, सैम पित्रोदा जी, जो हमारे भूतपूर्व गुजरात के हैं। भूतपूर्व ऐसे तो देखे, ऐसे तो देखे तो गुजरात के हैं, उनके मुंह से निकल आई। देखिए, वो अब नहीं है ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा और या दिलवाया गया। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता दिखाती है। भारत में जो भी हमारी विविधताएं हैं, हम लोगों में आपसी सामंजस्य और समरसता है। भारत में कभी भी रंग भेद नहीं हुआ, कभी भी नस्ल भेद नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक पॉइंट से बात करें, वी आर ए वेरी डाइवर्स जियोग्राफिकली, लिंग्विस्टिकली, रिलीजियसली, ethnically. We are a diverse country, there's no doubt about it. In fact, I'll be very ashamed. I'll be very ashamed if in New Delhi somebody calls my brother from Nagaland as Chinese. I think it'll be very, very shameful. It is not just Sam Pitroda. When Rahul Gandhi comes and says India is not a nation, India is a union of Union states. of States.
They are spreading secessionism. They are advocating secessionism because they know a strong and united India with a strong central government is not in their benefit at this point in time. So they are playing according to the script, trying to using the same thing which British did, divide and rule. Bring forth every decision to fore. Rahul Gandhi in his interviews has said that, petrol is always there, already there. All you need is a matchbox to be match to be lighted. This is what they are doing, so you know what is their agenda. They are trying to promote all kinds of division because in their lust for power, they cannot tolerate India's emergence as a strong nation. So they are kowtowing to their foreign masters. There's no doubt about it. Should that be tolerated, sir? I mean, in a normal country, it would not be tolerated, but we are not under normal situation. We have an election process that goes to almost 2.5 months. And government of the day cannot take any strong measures because then you are accused of, harassing your electoral opposition. I think the time for action should come after June 4th. Whatever action is required, I would not say be revengeful, but let the law take its due course. Let the law take its due course. Nobody should be given special privileges. Nobody should be, considered a holy cow that is to be revered because you belong to a dynasty or something like that. And some of the cases that been lingering, they need to be put on fast track. Okay. डॉक्टर साहब ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, सम ऑफ द केसेस लिंगरिंग पुट ऑन अ फास्ट ट्रैक. समझने वाले लोग समझ जाएंगे हम क्या बात कर रहे हैं. Now comes my final question, the main question. Why does this imperial West doesn't want Modi to come? So Why just pounds like other pounds, It's something like, two pounds are being played up till now. There's something more to come. So, in 2014 or 2013, India was the 10th largest in terms of nominal GDP. Now we are fifth. Now we are fifth. We have displaced Britain. IMF estimation is that in 2025, we will displace Japan and become fourth. What is happening? India's standing in the world on geopolitical issues in international arena is rising. Nobody wants to part away with the power you have accumulated over a period of time. And that is not just true in a nation. It is also true in the international arena, in geopolitics. So the nations that have been on top, they will fiercely resist another nation to take their place. Now, it's not that India is going to replace the United States, but India's upward trajectory is interfering with the existing mechanism. Hence this consternation, hence these attempts to contain India while still engaging it. That is what is happening. But unfortunately, the world is not static. The world is coming back to its old equilibrium when India and China were the countries with the highest GDPs. So, despite all the adversities, and despite all the, incompetent leadership, just in 10 years,
India is on a trajectory that nobody can deny India's due place in the Committee of Nations. And I think that is disturbing to a lot of people. And again, I will tell you, not just to the Western imperialists, but to the Asian imperialists also. दर्शक मित्रों, बहुत सीधी भाषा में कह दिया, अंग्रेजी में कहा, मगर बहुत स्पष्ट भाषा में कह दिया। मैं आपको एक गुजारिश करूंगा आज, फॉर दोज पीपल who are Indians but living abroad. If you really want to know India, if you really plan to understand the geopolitics from the Indian viewpoint, see, people understand geopolitics, but if you want to understand geopolitics from Bharat's viewpoint, Indian viewpoint, how India looks at the world now, then you need to subscribe, like, and share our channel. And I would request all of them today that please, if you have not done so, please subscribe to our channel and be our members. You can ask questions if you feel like, because we are live stream now. I'm having a few questions, all right, but I need your engagement more. I need your comments more. And I'm going to make this a habit every Sunday evening, Indian Standard Time, 4:30 p.m. Every Sunday evening. I'm going to be talking to Dr. Adityanjee about the Indian perspective of the geopolitical situations. And because elections are going on, today we are discussing about that. The world's perspective of India. How does the world look at it? And before I close today's program, I'll again appeal to you to like, share, and subscribe. I'll appeal Dr. Adityanjee also that, sir, please try and spread this word across the US so that people who really want to know the things happening in half an hour, about a week, for the events of the week in India, in a nutshell, what is happening and how things are going, then maybe they can get a lot of clues from what we talk. Sir, my last question comes here. You were very clear. Now here, what we find is, it's something like, Narendra Modi, if I know him a little, then I could say that he's something like a caged tiger. He's become aggressive. When you see him campaigning on the 4th round, 5th round, you see him aggressive. Something like a caged tiger. Some people might not agree, but that's, at times he believes, roaring is more important than actually trying to hit someone with a paw. A roar itself is good enough to get someone पैंट गीली कर देना, बड़ी बात. Now this is happening on Indian foreign policy because we are playing it very, very straight and hard to so many people. Is that the reason for जिसे कहें, जैसे हमारे विपक्ष को मोदी घृणा राष्ट्र घृणा हो गई? Is that the case with Western powers, that they hate Modi and so they hate India? No, it's the other way around. They hate India. But they love Modi. They don't even love Modi. They hate India. And because they hate India, they hate Modi. Because Modi is the messenger of India. A very strong messenger of India. They love Nehru. Why? Do I need to explain? सर, दर्शकों के लिए आप बता दीजिए हिंदी में, पश्चिमी राष्ट्र नेहरू को बहुत प्यार करते थे मगर मोदी को धिक्कारते हैं. हाँ, क्यों? क्योंकि वो शांति दूत थे, शांति के मसीहा थे, भारत को कमजोर रखना चाहते थे. और मोदी कहते हैं घर में घुस के मारेंगे. और मोदी राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्रहित को पहले सोचते हैं. अगर मोदी जी ऐसा काम नहीं करते और मोदी जी भी वही करते जो मनमोहन सिंह कर रहे थे कि सियाचिन को पकड़ा दीजिए पाकिस्तान को और डोकलाम को चलने दीजिए चीन को, तो ये जितना भी शोर शराबा मच रहा है ये नहीं मचता. कारण है क्योंकि देखिए, मोदी तो एक सिर्फ व्यक्ति है,
लेकिन इनका जो एजेंडा है वो भारत को नीचे रखना है हमेशा के लिए। तो उस प्रोसेस में कोई भी भारत का नेता हो जो भारत की छवि को प्रकाशित करने के लिए, स्वर्णिम करने के लिए आगे आए, उसके लिए यही होगा। हमें पता है लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था। हमें पता है डॉक्टर होमी भाभा के साथ क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, बराबर बड़े ये बड़े जो नाम लिए हैं। स्मृतियां हैं इनको हम भूल नहीं सकते। होमी बाबा के साथ क्या हुआ था, डॉक्टर होमी बाबा के साथ, और आज हमारा स्पेस प्रोग्राम कहाँ है, लोग जानते हैं। अच्छा लगे ना लगे, हमारे साथ काम करना पश्चिमी राष्ट्रों की एक मजबूरी है। उनको काम करना पड़ेगा, विकसते हुए भारत के साथ में काम करना पड़ेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मौका मिलने पर थापड़ मारने को तैयार नहीं होंगे। मित्रों, मैं बहुत स्पष्ट भाषा में आज बात कर रहा हूं, और मैं जानता हूं ये काफी लोगों को हर्ट होने वाला है, जो कोई एक राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं। मगर मैं भी एक राष्ट्रवादी हूं। मैं अपने इंडिया के लिए समर्पित हूं, और इसीलिए बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं कि जहां हमें रशिया की जरूरत होगी, वहां पुतिन हमारा दोस्त होगा। और जहां हमारी जरूरत होगी यूएस की, वहां अंकल सैम हमारा दोस्त होगा, फिर वो बिडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात भारत की विदेश नीति के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से आरूढ़ अप हो चुकी है। नाउ वी आर नॉट मिंसिंग वर्ड्स। सर, योर लास्ट कमेंट एंड देन विल स्टॉप विद दिस। I think from perspective of diplomacy, what West is doing, they are trying to engage India while simultaneously containing India. And there's a term for that. It's called neither containment nor engagement. It's called congagement. So it is a little tricky. One has to understand what they are trying to do. So they are trying to engage India, on one level, but on another level, they are promoting anti-India inimical forces, cultivating them, so that they can strike at the roots of India's foundation. जो चाणक्य ने किया था। मित्रों, बराबर समझ लीजिएगा, हम चुनाव के मौसम में हैं, और डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं बराबर समझ लीजिएगा। अभी 4 फेज का चुनाव बाकी है, कल एक चौथे फेज का होने वाला है। हम कौन चुन किसे चुन रहे हैं, उसे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सावधानी से हमें अपने नेता का चुनाव करना। और 4 जून के बाद, जैसे नरेंद्र भाई ने कहा है, बहुत कड़े फैसले होंगे। और कड़े फैसलों में काफी फैसले ऐसे होंगे जिससे जियो पॉलिटिक्स भारतीय दृष्टिकोण से काफी अफेक्ट होने वाली है। इतना लिख के रखिए। इसका कंटिन्यूएशन करेंगे, हम थोड़ी सी बात और करेंगे डॉक्टर आदित्य जी के साथ अगले संडे को, क्योंकि तब तक कोई एक और नया कबाल आ चुका हो। 2 तो हम देख चुके हैं, अब कोई तीसरा नया आ चुका होगा, और उसकी बात भी करेंगे। मित्रों, जाते जाते फिर से आपको एक बार कह देता हूं, आप सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और डिस्क्रिप्शन में जाके, इफ यू फील लाइक हेल्पिंग अस, यू कैन डू सो, बट विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कैन सब्सक्राइब टू अस एंड शेयर अवर चैनल। बिकॉज मैं आपको एक वजह से बोल रहा हूं, डॉक्टर अदिति जी को भी मैं बता रहा हूं, सर ऐसा हो रहा है कि काफी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली चैनल्स स्लो डाउन हो चुकी है। जहां पर कोई एक चैनल के 5 दिन के अंदर 5-6 हजार व्यूज आते थे, एक नॉर्मल बात ले लूं, वो 500-600 पे जाके अटक चुके हैं, बिकॉज इसको प्रोपेगेट जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता। और ये 4 जून तक का मामला है, वो भी हमें पता है। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑन
बिकॉज अल्टीमेटली अभी तक भारत ने अपना यूट्यूब डेवलप नहीं किया है। तो सर, आपसे भी एक गुजारिश है कि अपने मित्रों को, अपने भारतीयों को, कम से कम आपके पास जो भी हो ग्रुप में उन्हें भेज दीजिएगा, वो भी देखें। सर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले संडे को हम फिर से आएंगे, फिर से बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त पांचवें फेज की बात होगी। आपका और बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। सर, ये बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और इस कड़ी को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। बढ़ाते रहेंगे सर, डेफिनेटली। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।